Hey guys, what's up? So I'm making a video after a very long time, and the reason behind that is, जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ तो कोई ना कोई ड्रॉडाउन आ जाता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो लाइक फाइन, थोड़ा टाइम के बाद बनाते हैं, एंड इट बिकम्स लिटिल like posting content on Twitter and YouTube when your income doesn't depend on Twitter or YouTube, it becomes quite boring. I'm not gonna lie. So yeah, that's one of the reasons I would probably say I don't make content on YouTube. But anyways, today I have this thing that I wanted to discuss about, and that is stacking up the good decisions. So, I mean, in my life, which I'm gonna I'm gonna put a video about, how I scaled from having nothing to where I am today, and things that went through my journey. I'll be putting out a video on that as well. I have a recorded space that I wanted to put. It's pretty long. It's about 55 minutes, so it's a complete discussion. And I've obviously missed a lot of points there as well. But yeah, that's something that I'm gonna post, so you can watch that. But the thing is, what I believe differentiates my journey with other people is the good decisions, है ना? मैं कुछ एक random example देता हूँ. Like for example, जब when I was coding, right? So I didn't see the kind of results I wanted like the first day. You will never see the decisions, like you never see the results on the first day. It's like जब आप जिम जाओगे पहले दिन थोड़ी कुछ होता है. पहले दिन तो आप बस जाते हो, आपके बल्कि थोड़ा बहुत हाथ पैर दर्द होने लगते हैं, बट कुछ बॉडी में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, राइट? सो you come up the next day, you show up the next day, and you wait for a while. Then you show up the next day, then you wait. Then you show up the next day, and then you wait. है ना? यू कीप मेकिंग द गुड डिसीजंस. अगर अपन बॉडी भी बना रहे हैं तो यू कीप मेकिंग द गुड डिसीजंस. आज मैंने सिर्फ प्रोटीन रिच आइटम्स खाए. फिर मैंने बाद में आज वापस मेरे को एक ऑप्शन मिला यार जंक फूड खाने का, मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं खाया जंक फूड. ठीक है, मैंने खाया ही नहीं जंक फूड आज. ठीक है, फिर मैंने रात को मेरे को मन करा कि यार मैं जोमेटो से ऑर्डर कर लूँ, मैंने नहीं किया. फिर कल सुबह मेरे को मन किया यार मैं कुछ चिप्स या कुछ खा लूँ, मैंने वो नहीं खाया, मैं वॉक पे चला गया, फिर आया घर का जो बना हुआ था वो खा लिया. तो दीज आर ऑल गुड डिसीजंस, दैट स्टैक अप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड दोज आर द ones that result you what you are today. I have never seen a person who has taken all the right decisions. So he made a system, he followed the system, and he kept following the system when it was profitable and when it wasn't drawdown, and still be unprofitable. Usually, and in most of the cases, you will come out doing well, or at least you will learn a lot about it, and at least you will learn a lot about your system that you'll be able to tweak it in such a way that you will be able to make money out of it later down the line. Yes, there are certain cases where you would not, like if there is some sort of flash crash or there's some sort of thing, but most of the option selling systems are kind of profitable by default, and then tweaking it around depending on the market stuff is what you have to do, you know. Like for example, I tweak a lot of quantity in my system, depending on what's going on in the world. If there's a war coming out, I just decrease the quantity. If everything is good, I use normal quantity. So that tweaking is what I've learned over the years. But doing like without missing a single day, just repeating the strategy day by day, that's what I believe has given me the confidence to run the strategy even at the time कि भाई कहीं वॉर हो रही है, कहीं पे इलेक्शंस हो रही है, कुछ हो रहा है, बट मैं स्ट्रैटेजी अपनी बढ़िया रन कर रहा हूँ, डेली रन कर रहा हूँ. ठीक है, भले ही मैंने क्वांटिटी कम कर दी हो, बट अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं भाई मैं रन कर सकता हूँ, तो मैं रन कर रहा हूँ. ठीक है, एक बार आपके पास वो इनिशियल बैकअप आ जाता है, आप कर सकते हो. But the most important part in your life would be to believe in yourself, keep doing the good decisions, keep taking the right decisions, and then फिर बाद में सोचो भाई वो फल वल के बारे में. ठीक है, कर्म करो पहले. पहले कर्म तो कर लो. वो फल के बारे में अपन डे वन से सोचते हैं ना भाई, कुछ नहीं हाथ लगता. दैट्स जस्ट द रियलिटी. अभी मैं उसको बार बार रिपीट करूंगा तो नथिंग इज गोना चेंज, है ना? सो दिस इज इट फॉर द वीडियो. आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय बाय.